Her walking. She falls once or twice a month, most often during walking and transfers. Jean's stroke has resulted in numerous sensory, motor, and cognitive impairments. While Jean has normal range of motion in her unaffected left side, she has developed secondary musculoskeletal problems, including limited range of motion in the shoulder, wrist, and hand of her hemiparetic right arm. In addition, she has limited range of motion in the ankle, knee, and hip of her right hemiparetic leg. She has spasticity in her elbow and wrist flexors, which is tested using a quick stretch. She has mild resistance to a quick stretch of the right plantar flexors. Abnormal muscle synergies limit Jean's ability to use her hemiparetic limbs functionally. The resting posture of her right arm, including shoulder depression, elbow flexion, and supination, and wrist and finger flexion, suggests the presence of a flexor synergy. The effect of synergies on movement is examined using the Fuggelmeyer. With her elbow flexed, Jean is unable to pronate and supinate her arm, indicating an inability to combine flexion and extension synergies in her arm. She has limited ability to combine flexion and extension synergies in her right lower extremity. While she is able to flex her knee in sitting beyond 90 degrees, she is unable to flex her knee without also flexing her hip in standing. She is unable to dorsiflex her right ankle when her hip and knee are extended. Weakness in addition to abnormal synergies contributes to her functional limitations. Stroke results in a wide range of sensory impairments. Jean has bilateral extinction, a sensory problem in which a stimulus on the hemiparetic side is perceived when presented alone, but is not felt when a second stimulus is presented simultaneously on the non-hemi side. While Jean does not have any visual field deficits, many people with stroke suffer homonymous hemianopsia, which restricts the person's ability to perceive objects in half the visual field. Following stroke, many persons have cognitive impairments, including problems with memory, attention, and executive function. Here, attentional deficits are identified using the trail-making test. Postural control problems are common following stroke. Jean is able to sit independently, but she has a posterior tilt of the pelvis, giving her a flat back, a thoracic kyphosis, and forward head position. She has right shoulder depression, and her trunk is collapsed into flexion on the right, and her head is slightly rotated to the right. Jean is able to stand independently without her walker, but she stands asymmetrically, with her center of mass over the non-affected leg. Her right shoulder and pelvis are retracted and her leg externally rotated. Many factors contribute to weight-bearing asymmetry, including weakness, muscle tone, sensory and cognitive impairments. In response to larger perturbations, Jean is able to reach with the left arm to prevent a fall. She is unable to use her hemiparetic arm to protect herself from a fall. In standing, Jean relies on reaching with her arm for support in response to a small forward perturbation. She is not able to step to recover from a large perturbation and relies on assistance. In response to a backward perturbation, she is unable to recover without the use of her arms and requires assistance to prevent a fall. Jean is independent in sit to stand, but she requires several tries and relies on her non-involved arm to assist her in rising. She requires grab bars to get up from the toilet and cannot get up independently from the low couch in her living room. On the modified clinical test for sensory interaction and balance, Jean is able to maintain balance when standing on the firm surface with eyes open, but requires close guarding. When standing on a firm surface with eyes closed, she requires assistance to keep her balance and prevent a fall. She is unable to maintain balance when standing on foam with eyes open or closed.
Jean walks with a cane or walker in her home, but uses a wheelchair in the community. With her walker, Jean's gait velocity is 0.5 meters per second, and she is much slower with her cane. Her hemiparetic gait is characterized by equinovarus foot position at initial contact, knee hyperextension in mid-stance, a forward lean of the trunk, and limited hip extension. During swing, she has reduced knee and ankle flexion, and persistent plantar flexion results in poor foot clearance. Researchers have found that because of the post-stroke paresis, there is a reduced ability to generate a plantar flexor moment for push-off during stance. This is often compensated for by increasing hip flexor moment at pull-off, which helps her advance her swing limb. On the timed up and go test, Jean uses her left arm to get out of the chair. She has difficulty on turns, and she is slow, completing the test in 35 seconds. With the addition of a secondary cognitive task, her time increases to 45 seconds, and she makes errors on the secondary task. Following stroke, the control of gait is less automatic and requires more attentional resources, increasing the risk for falls when performing more than one task. Jean has difficulty managing the demands of walking in the community. She is unable to increase her gait speed and cannot cross a street in the time allotted by the traffic light. Jean has limited ability to use her right hemiparetic limb. On the Wolf Motor Function Test, she has limited ability to abduct her shoulder and compensates by moving her trunk to place her forearm on the table. She is unable to extend the elbow of her hemiparetic arm, and this is likely due to many factors, including weakness, flexor synergy, spasticity, and impaired motor control. She is unable to extend her fingers to form a palmar grasp and has insufficient grip strength to lift the full can of soda to drink. Jean cannot flip the index cards as she is unable to supinate her hemiparetic limb. She is able to flex her fingers to pick up a paperclip, but her movements are slow and discoordinated. She is unable to form a lateral pincer grip and thus is unable to turn the key in the lock. Jean has reduced in-hand manipulation skills and uses her non-involved hand to position the pen. Her writing is slow and her movements are discoordinated. Jean was right-hand dominant before her stroke and despite the difficulties, prefers to write with her right hand. Lights. I hope you people understand what is stroke and how many problems the stroke people usually have. I have selected this video because this video is an ideal video and is a chronic stroke patient for the last 6 years almost. She is having these problems. But fortunately, unfortunately, because she is living alone, she is not concentrating on her therapy. That is why secondary problems, she has developed a lot of secondary problems. And you people all knows how much problems. I hope कि कुछ ना कुछ आप लोगों ने इसको चेक आउट कर लिया होगा कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं और आपने अपने कागजों पे अपने पेपर्स के ऊपर इनको लिख भी लिया होगा कि इसमें मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं. ठीक है. The next question is, following her stroke, Mrs. Jean J received therapy for 5 weeks. She gradually regained the ability to stand, walk and feed herself. सिर्फ 5 हफ्ते की थेरेपी से, just 5 weeks of therapy. After this much massive strokes, she is able to walk. उन्होंने आपको बताया कि walk in the community, that was difficult for her. For community, she was using wheelchair. But after 5 weeks of therapy, she was able to move in the community
wheelchair with the help of walker, which she was not doing there before, and gradually regained the ability to stand, walk and feed herself. Now her maximum problem was to feed herself. She can cook herself because she is living alone. Her social contacts are there, she is going to their friends. Everything was there. So the question arises, what is the cause of recovery of motor function even after so long? What is the cause of recovery? ये कैसे recover कर गई after 6 years? How much is due to spontaneous recovery? Is there anything which is because of the spontaneous recovery in this particular case? Is there any answer? How much recovery is because of therapeutic intervention? And how much function one can achieve when discharged from rehabilitation? And what exercises and rehabilitation required after rehabilitation and why? These are the few questions we have to answer this. In this particular case, जब हम थोड़ा सा अगला सेक्शन पढ़ेंगे तो आज के सेशन का मकसद यह है कि आपको अब बातें उतरना शुरू हो जाएंगी कि आपको ज़हन में ये आएगा कि ये स्ट्रोक का पेशेंट है, ये उसकी प्रॉब्लम थी और वो कैसे ठीक हो रहा था. सो एंड ऑफ द डे मेरा एम यह है कि आपको इस केस के मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ ये केस इस वजह से नहीं इस वजह से इम्प्रूव हुआ था, ये इसको थेरेपी दी गई होगी, ये इसको थेरेपी देगी. आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है. इट्स नॉट मी टू डिसाइड कि यू डू दिस वन, यू डू दिस वन, यू डू दिस वन. नो, you people should decide. You must be very creative because stroke of two persons is not same and two individuals also different. Two individuals also different and the stroke of two people is not same. So every person, it is their basic right कि उसको individually evaluate किया जाए और उसको individually discuss किया जाए और उसको individually manage किया जाए. Clear? Next. So I talked about, ये नजर आ रहा है, ये लाइट्स को ऑफ कर दें, यहाँ से लाइट ऑफ कर दें, पीछे वाली लाइट जला दें. So there are two types of recovery. One is early spontaneous recovery, the soon after the stroke happens. So whatever happened to the brain, the recovery start from the next moment because हर वक्त ब्रेन के अंदर कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्ट होते रहते हैं. जैसे ही आपको इन्फ्लेमेशन होती है सो रिपेयर प्रोसेस भी साइड बाय साइड जो है वो चलना शुरू हो जाता है. सो अर्ली स्पॉन्टेनियस रिकवरी, द रिपेयर प्रोसेस अकरिंग विद इन द सीएनएस इमीडिएटली आफ्टर द इंसल्ट रिजल्टिंग रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन बीइंग इनिशियली लॉस्ट. ठीक है. सो ये जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी है जो कि फौरन ही स्टार्ट हो जाती है जैसे ही किसी आदमी को स्ट्रोक या किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है. The second was is function-induced recovery, the restoration of the ability to perform movement in the same or similar manner, or it was performed before the injury. यानी अगर restoration of movement similar manner में जो कि patient पहले कर रहा था और वो दोबारा से करना शुरू कर दे stroke के बाद, ठीक है, लेकिन जो spontaneous recovery का period है वो पास होने के बाद ये सारा काम हो तो उसको कहते हैं फंक्शनल इंड्यूस या एनवायरनमेंट इंड्यूस या एक्टिविटी इंड्यूस रिकवरी. सो नाउ वी आर गोइंग टू, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से है, मिसेस जीन्स की रिकवरी कहाँ से हुई? फंक्शनल इंड्यूस. डेफिनेटली बाय फंक्शनल इंड्यूस रिकवरी. नेक्स्ट. सो जो फंक्शनल जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है वो क्यों होती है और कैसे होती है? इनसाइड द ब्रेन आफ्टर इंसल्ट देयर इज एडिमा. नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू and opening of collateral channel for circulation to the lesion area, and this takes place over a relatively short period of 3 to 4 weeks. So whatever the patient got improvement just after vital stable and the patient go back to home and he has improved, shown some improvement
or sometimes the patient shows very good improvement, but this improvement is definitely is not because of therapy, is because of spontaneous recovery. हमारा काम जो actually start होता है वो फंक्शन इंड्यूस रिकवरी के वक्त होता है, लेकिन अगर इस स्टेज पे भी जो 3 to 4 वीक की स्टेज है, अगर थेरेपी राइट डायरेक्शन में की जाए तो पेशेंट की जो मस्कुलोस्केलेटल सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हैं उनको बचाया जा सकता है और फिर उसकी वजह से रिकवरी ज्यादा बेहतर तरीके से पेशेंट की हो जाती है। क्लियर? यार ये सेंटर वाली लाइट्स जला दें। नेक्स्ट, so ये है spontaneous recovery. Look how the information was blocked, and when the spontaneous recovery होगी तो messages transfer जो है वो start हो जाती है और फिर patient जो है वो recover करता है। Next, factor responsible for forced recovery, function induced recovery or late recovery. अब जो 4 हफ्ते के बाद असल स्टोरी शुरू होनी है वो है हमारे काम की, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दीज 3 mechanisms, एंड दीज आर कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. इट इज अ फिजियोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच. Physiological based approach means there is a neuroplasticity, means brain is, the whole life is plastic. There are changes, structural changes, and if there are structural changes means there are functional changes inside the brain. But how we can achieve that? We can achieve all those because of activity and environmental input. Without activity and environmental input, we cannot achieve those goals. So neuroplasticity is the structural change in the brain, and structural change in the form of cellular, in the form of neurophysiological, and in the form of biochemical. Everything has been changed in response of activity, and the brain will grow. Next mechanism is mechanism of neuroplasticity. These are those mechanisms. Neuroplasticity is a term, but mechanism of how it will happen. There are different methods or different, you can say, mechanism which will tell कि ये ब्रेन के अंदर हो रहा है. ठीक है, इसमें एक कंपनसेटरी मैस्क्यूलेट मैकेनिज्म है, एक है कॉर्टिकल रीमैपिंग, और तीसरा मैकेनिज्म जो है वो होमोलॉगस फंक्शनल एरिया की डेवलपमेंट होती है. इस तरह 3-4 मैकेनिज्म है जिसमें होता ये है कि ब्रेन जो है वो किसी एरिया के अंदर जहाँ पे डैमेज हुआ है वहाँ पे ब्रेन जब एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन उस एरिया में, चूंकि वो डेड हो गया हुआ है, डैमेज्ड एरिया है, तो उसके साइड बाय साइड जो एरियाज होते हैं वो उसके अंदर नए न्यूरॉन्स डेवलप करते हैं, या ये कह लें कि सेल्स डेवलप नहीं करते, रादर दे डेवलप द एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉइड्स, जो कि एक सेल बॉडी जो है वो दूसरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करना शुरू कर देती है. सो इसी तरह कॉर्टिकल रीमैपिंग होती है. फिर होमोलॉगस रीजन एडाप्टेशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि कोई दूसरे सेक्टर में एक नया एरिया डेवलप हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू दैट एक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल इनपुट. और अब चूंकि ब्रेन के स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी में चेंज आई है, तो वो एरिया जो है वो ब्रेन के वो फंक्शन करना शुरू कर देता है जो फंक्शन जो है वो इंजरी से पहले ब्रेन ने लॉस्ट किए. अंडरस्टैंड? सो ये है बेसिक मैकेनिज्म. एंड अडॉप्टेशन ऑफ मोटर परफॉर्मेंस, this is the third. Whatever left to the patient and whatever he has gained, उसका रिस्पॉन्स हम सबको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अडेप्टेशन. अब जो भी उसका पैटर्न है, हमें पता है कि स्ट्रोक का पैटर्न जो है कुछ इस तरह से चलने का है. अंडरस्टैंड? अब अगर थोड़ी देर बाद पेशेंट ठीक हो जाता है तो ये हाथ उसका ठीक आ जाता है, वो कुछ इस तरह चलना शुरू कर देता है. थोड़ा सा और बेहतर होता है, उसका हाथ नीचे आ जाता है, वो थोड़ा सा ऐसे चलना शुरू कर देता है. क्लियर? जैसे जैसे वो इम्प्रूव करता जाता है उसकी अडेप्टेशन जो है वो चेंज होती रहती है. एंड दिस अडेप्टेशन इज बिकॉज ऑफ देयर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स जो कि रिड्यूस हो रही विद द passage of time or with the activity. Next. So
हमें अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑप्टिमल फंक्शन क्या है, लर्निंग क्या है, रिकवरी क्या है और कंपनसेशन क्या है। कितने लोग जो हैं उन्होंने पेशेंट को देखा हुआ है इस तरह करते हुए, पेशेंट बैठा हुआ है, हाउ मेनी पीपल सॉ द पेशेंट डूइंग लाइक दिस? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। आपने कभी इस चीज पे गौर करता है पेशेंट ये क्यों करता है? Why he is doing like this? कंपनसेशन क्या है? वो उससे कोई काम तो नहीं कर रहा। Why he is doing like this? Always. वो उसकी तरफ एम्फसाइज करना ही नहीं चाहता। He has ignored that hand. He doesn't want it that. वो समझ बैठा कि ये काम नहीं करेगा। हर काम वो क्या कर रहा है? वो अपने लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है। इवन वो खाना जो है वो भी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहा है। Am I right? ठीक है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये कंपनसेशन में आती हैं। सो whenever there is a system and that is called neurophysiological, neuroplasticity is there, mechanisms are there and there is evidence that mechanisms work well. आप अब जज कर सकते हैं कि क्या वाकई जो है ये रिकवरी इसी वजह से हो रही है। सो इसके एविडेंसेस अब मौजूद हैं। तो फिर हमें कंपनसेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पेशेंट को हमें एम्फसाइज करना होगा कि वो किस तरफ जाए, रिकवरी या फंक्शन की तरफ जाए, रादर कंपनसेशन। नेक्स्ट। So the question is, should therapy be directed at recovery of function or compensation? So definitely in case of stroke हमारा क्या मकसद होगा? रिकवरी ऑफ फंक्शन की तरफ जाएंगे, कंपनसेशन की तरफ नहीं जाएंगे। बट अगर यही बात मैं करूं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए, तो फिर आपका क्या ख्याल है? अगर मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की सेंस में, स्ट्रोक को भूल जाए 1 मिनट में, तो फिर कंपनसेशन क्या होगी? फिर किस तरफ जाएगी? आपका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए? कौन सी रिकवरी करनी चाहिए आपको? लेट्स पेशेंट हैव अ कंप्लीट लीजन। जब एक पेशेंट की कंप्लीट लीजन हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई है, तो वहां पे नॉर्मल है कि आप अब कंपनसेशन करेंगे उसकी, ठीक है? उसके फंक्शंस को नई चीजें सिखाएंगे उसको कि कैसे कंपनसेट करना है। अब आपने उठना कैसे है, रोल कैसे करना है, बैठना कैसे है, खाना कैसे खाना है, व्हील चेयर पे ट्रांसफर कैसे होना है, बेड पे ट्रांसफर कैसे होना है, बाथरूम कैसे यूज करना है, टॉयलेट कैसे जाना है, नहाना कैसे है, everything. It is the job of physiotherapist to instruct everything to those patients who got spinal cord injuries. Understand? But in a compensatory manner now. Next. So the old research suggests that regeneration and organization were not possible in adult CNS, so therapy directed at compensation. पहले लोग जो थे वो compensation की तरफ जा रहे थे. Recent research suggests that CN has remarkable capacity of great plasticity and remains the ability of neural reorganization. Therefore, at present, we are going towards recovery of function. अब क्वेश्चन है कि हम जाएं कहां, Where we will go. इतनी ज्यादा अप्रोचेस लोगों ने बता दी। अच्छा, कोई पुरानी अप्रोचेस के नाम आते हैं आप लोगों को? बुबात, किस किस को बुबात आती है? यहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे, थेरेपिस्ट भी होंगे, आई होप। अच्छा, कौन सी अप्रोच कोई थेरेपिस्ट अगर मौजूद है तो वो बताएंगे वो यूज करते हैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग में? बुबात, बुबात क्या है?
अच्छा, ये नहीं न्यूरो डेवलपमेंटल, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या थी? पीएनएफ, बहुत मशहूर है ना? पीएनएफ स्ट्रोक में यूज होती थी, अब भी यूज हो रही है। हाँ, कितने लोग हैं इसके हक में कि पीएनएफ वर्क वेरी वेल? यार इजी हो जाए, पीएनएफ वर्क वेरी वेल। There is no evidence for all the previous approaches that they are working. No PNF, no Babat, they don't have any evidence कि इनके जरिए कोई रिकवरी मुमकिन हो रही है। Understand? So the important thing is कि these are all approaches जो primitive है, root approach, Babat, Bunstorm, sensory integration therapy, these are all now obsoleted. ठीक है? So whatever the right approach I will teach you today, and that is out of these contemporary approaches: motor control, motor learning, neuroplasticity, constraint induced, modified, task oriented approach, and compensatory. These are the newer approaches towards the rehabilitation of stroke. Next. So task oriented approach जो कि हमने आज के दौर में सेलेक्ट की, इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात कि टास्क ओरिएंटेड अप्रोच जो है ये फंक्शनल है। आप उसको टास्क देते हैं पेशेंट को और वो टास्क को सॉल्व करता है। और जब वो आप किसी पेशेंट को भी आप असाइनमेंट के